Ladies and gentlemen, how are you all? Hello guys, how are you all? I am asking from you all one question, that how are you all? Are you all fine or not? Yes, I am also fine, and I am also feeling outstanding and amazing and awesome and excellent. Today I am feeling tickle pink, chap to bit. Like I is still having a whale of time on cloud nine. And today, first of all, I would like to say some of the शायरी. You know, ladies and gentlemen, I would like to say some funny शायरी. मैं आज जो है ना, मैं ना कुछ फनी शायरी के साथ अपने स्पीच को, अपने वंडरफुल ब्यूटीफुल स्पीच को आगे बढ़ाना चाहूंगा. पहले मैं कुछ फनी मजेदार चुटकुले वाले शायरी सुनाना चाहूंगा. मैं फनी ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल इमोशनल शायरी भी सुनाऊंगा. तो पहले एक फनी शायरी के साथ अपना भाषण, अपना स्पीच को सुनाते हैं. तो सुनिएगा. आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी. ये क्या बोला मैंने? आंखों में नमी थी, विटामिन सी की कमी थी, और जिसके साथ रात भर बात किया वो गर्लफ्रेंड की मम्मी थी. राइट. अब नाउ आई एम हैविंग अनदर शायरी. सो बी ऑल इयर्स. ये मोटिवेशनल शायरी है जो कि इमोशनल भी है, साथ ही साथ मोटिवेशनल भी है. तो बी ऑल इयर्स. मायूस मत होना कभी जिंदगी में, कभी भी तेरा काम बन सकता है. कि मायूस मत होना कभी भी जिंदगी में, कभी भी तेरा काम बन सकता है. किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है. अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू राइट एक और शायरी में, बस एक और अच्छा शायरी, मजेदार, जो आपको दिल को छू जाएगी. टुडे आई एम हैविंग शायरी and that शायरी will touch your heart. कि जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे. कि जिनके ना आते थे जवाब उनके सलाम आने लगे. मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नींद के पैर पे आम आने लगे. राइट. अब शायरी नहीं बोलूं, अब मैं शायरी नहीं बोलूंगा. No, I will not speak the शायरी. No, I am going to start my wonderful, beautiful, excuse me, oh my God, excuse me. मैं आज लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा. Excuse me guys, oh my God. मैं आज तुम्हारी वाइफ के बारे में बात नहीं, मैं अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ गाइस. मैं आप सबकी लाइफ के बारे में, आपका जीवन के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में. ये लाइफ है क्या, और लाइफ में हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. हाउ कैन वी बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन आवर लाइफ, एंड हाउ कैन वी ग्रो इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, हाउ कैन वी बिकम अ रिच पर्सन, वेल्दी पर्सन इन आवर लाइफ. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. हाउ कैन वी बिकम अ सक्सेसफुल मैन एंड फेमस पर्सन इन आवर लाइफ. आज जो है ना मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी वाइफ, सॉरी मेरे पास वाइफ नहीं है. आई एम नॉट मैरिड, आई एम अनमैरिड. मैं वाइफ के बारे में नहीं, मैं तो लाइफ के बारे में बात करूंगा. अगर आप भी जानते हैं कि, अगर आप भी सुनना चाहते हैं, if you also want to listen that, how can we grow in our life, how can we develop our personality in our life, how can we get respect, value in our life. So first of all, be all ears. The meaning of be all ears means listen to me carefully and attentively. Excuse me, are you all getting or not? So let's get started. मैं जो है ना, आज आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में बात बताने जा रहा हूँ. बिलीव इन योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ टैलेंटेड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट पर्सन इन योर लाइफ, इफ यू ऑल्सो वांट टू बिकम अ ग्रेट, splendid, supercalifragilisticexpialidocious person in your life, if you also want to get respect, if you also want to complete your dreams, if you also want to complete your aims, if you also want to achieve your goal, success, aim and dream, if you also want to become a rich person, if you also want to become an icebreaker public speaker,
फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। आज जो है ना मैंने टी शर्ट्स भी पहन रखे, ये देखो बिलीव, क्या लिखा है, BELIEVE, बिलीव। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं है, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हो? Always say yes, I can do it. Always say I can do each and everything in my life. Oh my God! आज मैंने ये टी शर्ट क्यों पहना है? मैं इस टी शर्ट से आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। बिलीव इन योर सेल्फ का मीनिंग, डू यू नो द मीनिंग ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ? बिलीव इन योर सेल्फ मीन्स विश्वास करो, खुद पे भरोसा रखो कि यस आई कैन डू इट। ऑलवेज से दिस लाइन फ्रॉम योर बॉटम ऑफ योर हार्ट। हमेशा तहे दिल से कहो हाँ। Whenever someone is saying to you that can you speak English? If you don't know English, but always you have to say yes, I can speak English in a better way, in a proper way, in a super way. Right? Am I saying right or wrong? Yes, I am saying absolutely right. I am saying absolutely right. Right, guys? मैं आज जो है ना, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि लाइफ में हम ग्रो कैसे करें और क्या क्या चीजें नीड है हमारी लाइफ में, जिसके द्वारा हम रिस्पेक्ट पा सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सुपीरियर बना सकते हैं। ऐसा क्या करें, ऐसे कौन सी क्वालिटीज लाएं अपने अंदर, which type of qualities we should have, right, by which we can shine like a sun, we can grow in our life. So today I am going to tell you, so be honest, मैंने पहले आपको पहला जो पॉइंट बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट पॉइंट बिलीव इन योरसेल्फ। यू डोंट हैव टू गिव अप इन योर लाइफ, नेवर गिव अप इन योर लाइफ गाइस, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। यू नो द मीनिंग ऑफ गिव अप? गिव अप मींस हार मानना। हे मॉम, please don't disturb me. Hey mom, right now I'm speaking English. First of all, don't disturb me, okay? Please let me speak English because I want to improve myself. Hey mom, please wait a minute. First of all, let me complete my point, okay? You know guys, believe in yourself and never lose yourself. कभी हार मत मानो. Never give up in your life. Because of giving up, you are not able to achieve your success. You are not able to receive. You are not able to achieve your goal. You know guys, so many people are getting failed once, twice, thrice, and they're thinking that I can't become a successful person in my life. Oh my God, excuse me guys, excuse me. Today I will tell you so many points. Today I will tell you so many tricks and techniques by which you can grow in your life. First of all, believe in yourself, and second is never lose yourself, never give up in your life. कभी हार मत मानना, तुम किसी भी मेहनत को हार मत मानना। मैं कहता हूं मेहनत करते रहो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि घड़ी किसी और के हाथ में होगी और वक्त तेरा खुद का बताएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि घड़ी तो किसी और के पास आएगी लेकिन वक्त तेरा बताएगा, right? That's why I'm saying that always keep working hard in your life. मेहनत करो, work hard, go to extra mile, work hard, burn midnight oil. If you really want to achieve your success, become a sedulous, acidulous and diligent person. Do you know the meaning of diligent? Sedulous, industrious means to say मेहनती बनो, lazy नहीं बनो. You don't have to become indolent couch potato. Let's start with talk about indolent couch potato, laid back. You don't have to become a lazy person in your life. If you're lazy, means to say you are crazy. When you are lazy, you are crazy. But when your life is busy, so your life will be easy. And never take tension in your life. Because of taking tension, you know guys, because of taking tension, you are not able to achieve your goal. Always laugh and be happy. Always say I am fine. Even you are sad, bad and upset, you always have to say I am fine. जब तक आप नहीं हो अपनी लाइफ में फाइन, तो कैसे करोगे आप अपनी लाइफ में साइन? कैसे करोगे आप अपनी लाइफ में साइन? ये लाइफ को टेंशन में नहीं अटेंशन में जीना चाहिए। इस लाइफ को टेंशन में नहीं अटेंशन में जीना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू लिव योर लाइफ इन टेंशन, डिप्रेशन। You should, I should, we all should live our life in attention. ध्यान से जीना चाहिए। मतलब क्या है मेरा कहने का? If you are making any kind of mistake, always accept your mistake in your life. When you are not accepting your mistake, when you are not accepting your mistake,
how can you become a good person? You are trying to becoming you are saying I am good person. You are making mistake and you are not expecting your mistake. Excuse me, what are you doing? Oh my god, oh my goodness. Hey man, what are you doing? You are making mistake. You are showing your ego. Never become you should not have negative attitude. You should not have an ego. Because of having negative attitude, because of having an ego, we are not able to grow in our life. You know guys, if you're making any kind of mistake, you are saying I am the boss. You are saying I am gunda. Oh my god, you are saying I am the boss. Oh my god, you are making a mistake and you are saying I am the boss. You are thinking in your mind this line, oh, I am the great person. You are making mistake, you are teasing to other people, you are making fun of other people, and you are disturbing to other people, and you are saying I am boss. How can you say? Why are you making fun of someone? Why are you beating to someone? Why are you having one negative attitude? You are having negative attitude. That's why you are not able to move forward in your life. You are not able to grow in your life. You are not able to develop your personality. You are not able to become a famous, popular person in your life because of having a negative attitude and ego. You should not have an ego. You should not have negative attitude. Excuse me. If you really want to become a good person, if you really want to achieve your success and goal, always accept your mistake, guys. Always accept your mistake. Sorry बोल सकते हो. If you are making any kind of mistake, so you can say, excuse me, sorry, hey, sorry, hey, please, it was my mistake, hey, sorry. If you are making mistake, you should say sorry, because sorry is a word. Sorry एक ऐसा word है. Sorry एक ऐसा word है. अगर इंसान सॉरी बोले ना तो लड़ाई खत्म. अगर ध्यान से सुनना बी ऑल इयर्स. अगर इंसान सॉरी बोले ना, अगर इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो आदमी खत्म. सो ऑलवेज whenever you are going to fight with someone and this is your mistake, it takes two to tango. It takes two to tango का मतलब है कि लड़ाई में दोनों की गलती होती है. It takes two to tango. ताली एक हाथ से नहीं बजती है, right? It takes two to tango. So this is your also mistake. Always try to accept your mistake. Hey man, this is my mistake. Hey man, please forgive me. Hey man, please pardon me. Hey man, I am really very sorry. I am really very sorry from bottom of my heart. From bottom of my heart. Excuse me. And if you really want to achieve your success, if you really want to become a good person, if you really want to achieve your goal, if you really want to become a rich person, wealthy person, famous person, popular person in your life, so what? Have patience. सब्र रखो, क्योंकि कब्र में भी जाने के लिए सब्र करना पड़ता है. कब्र में भी जाने के लिए सब्र करना पड़ता है. इसलिए always have patience. Have patience plays an important role for becoming. So many people are there. Excuse me guys. Hey guys. Hello guys. How are you guys? I hope you all are fine. But guys, I must have observed many people are there. They are not fine. They are not feeling good and good. Why? Because they are not having the patience. They are saying I am working hard. They are saying excuse me. They are saying I am working hard. I am not able to get my success. They are not having the patience. Because of not having the patience, they are losing their self. They are giving up in their life and they are not able to achieve their success. They are not able to achieve their goal. They are not able to make their future right and bright. Excuse me. If you really want to fly high in the sky, if you really want to fly high in the sky, if you also want to shine like a sun, so have some patience. थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज है. सब्र का फल तो मीठा होता है, लेकिन कब्र में भी जाने के लिए सब्र करना पड़ता है. उसी तरह अगर आप सक्सेस भी पाना चाहते हो तो हैव सम पेशेंस. थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, राइट? एंड वर्क हार्ड तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है. Without working hard, can you get success? Can you become a successful person in your life? No, totally no, definitely no, absolutely not. You can't become a successful person without working hard. When you're not putting your efforts, when you're not working hard, when you're not, then you can't become anything in your life. Excuse me. And guys, hello guys.
First of all, if you really want to become a good person, if you really want to become a successful person, first of all, educate yourself in a better way, in a better way, in a better way, right? If you want to become a successful man, if you want to become a good person in your life, if you really want to achieve your success, excuse me, first of all, education matters. Focus on your education, guys. If you're not focusing on your education, if you're depending on your luck, if you're thinking that, oh my God, one day will come, I will become, neither one day will come, nor you will become until or unless you are educating yourself. First of all, educate yourself in a better way, in a proper way, because education plays an important, vital role in our life for becoming a successful person and for getting a success. Are you all getting or not? Hello everybody, are you all getting or not my point? आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, मेहनत तो करते हैं कई लोग का ना, फोकस जो होता है ना पढ़ाई पे नहीं होता। कई लोग सोचते हैं अरे वन डे विल कम, आई विल बिकम, बट मैं कहता हूँ neither one day will come nor you will become. So always focus on your education, right? Well educated person बहुत मैटर्स करता है सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, राइट? मैं एक चीज बोलूंगा, दुनिया में सब कुछ पढ़ाई है। पढ़ाई समझ लो ना, पढ़ाई मतलब अपना नहीं है, दूसरा है। दुनिया में सब कुछ पढ़ाई है, कोई अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है, So always educate yourself in a better way. You should have knowledge, you should have talent, you should have skills. अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, राइट, अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, फेमस बनना चाहते हो, पॉपुलर बनना चाहते हो, तो स्किल्स को सीखो। स्किल्स मीन्स टू से आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैन चेंज योर लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल्स कैन डेवलप योर पर्सनालिटी इफ यू आर रियली फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। So many Shahrukh Khan is there. Oh, so many. Oh my God. Excuse me. I'm really very sorry. There are not too much Shahrukh Khan. There's only one Shahrukh Khan. There is a Shahrukh Khan. There is a Salman Khan. There is a Amitabh Bachchan. There is a Amir Khan. There is a Ajay Devgan. There is a Govinda. So many actors are there. So many actresses are there. एक्टर्स के पास एक्टिंग नहीं आती करनी, क्या वो एक्टर बनेगा? नहीं। एक एक्टिंग क्या हो गई? स्किल्स हो गई। तो आप स्किल्स को जल्दी से सीखो, जितना जल्दी हो सके। As soon as possible, you are supposed to learn different kinds of skills. You should have so many skills. You should have so many skills. आपके पास सारी skills. You should have every skills. आपके पास सारी कलाएं होनी चाहिए। Right? Communication skills ले लो। You can take the example of communication skills, right? अगर एक्टर को एक्टिंग नहीं आती, डॉक्टर को डॉक्टर करना नहीं आता, डायरेक्टर को वीडियो शूट नहीं करना आता, तो वो बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अगर आप भी कुछ बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो स्किल्स को सीखो, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश। If you really want to move forward in your life, if you really want to achieve your success and goal, you must learn communication skills. You must learn English language, because English language plays an important role in our life. Really, guys, really. I am not telling a lie. I am speaking the truth. Are you all getting or not? Am I saying right or wrong? Hey, my God. Hey, viewers. Hey, audience. Hey, spectators. Tell me, am I saying right or wrong? I am saying absolutely right. Please write in the comment box. If I am saying absolutely right, so please write in the comment box. Excuse me. This is my dialogue. Excuse me. Oh my God. You should also learn communication skills. Communication skills means English language. You should learn English language. You should learn spoken English, because it is very important, guys. Really very important. मैं इंग्लिश के लिए शायरी बोलना चाहूँगा। मेरा इंग्लिश जो है ना बहुत फेवरेट है। इंग्लिश बहुत फेवरेट है मेरा। इंग्लिश के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा कि दूध में चावल डालने से खीर बनती है,
और इंग्लिश सीखने से तकदीर बनती है, इंग्लिश सीखने से तकदीर बनती है। सो मस्ट ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट। यू कैन ज्वाइन न्यू जनरेशन इंस्टीट्यूट if you want to become icebreaker, if you want to become an icebreaker public speaker, if you want to become an effective, active, impactful, dynamic, splendid, supercalifragilisticexpialidocious speaker, so you can join New Generation Institute run by Suraj Christie. Thank you very much. You have been the great spectators, great audience, and supercalifragilisticexpialidocious listeners of the day. Excuse me. Have a nice day. Wish you all the best. Have a nice day. See you tomorrow in the next session. Please like, subscribe, and share, and follow my all the rules. Alright? Follow my rules. If you really want to achieve your success, if you really want to move forward, go ahead in your life. If you really want to shine like a sun, if you really want to fly high in the sky, if you really want to become a famous, popular person in your life, if you really want to convert the impossible into possible thing, if you really want to, if you really want to fly high in the sky, so follow my rules, follow my points, alright? So maybe we'll see you tomorrow in the next session. Keep learning, keep shining, keep following my rules, keep learning, keep improving, keep shining, keep following my rules, and keep smiling, keep shining, keep achieving, keep receiving, keep moving ahead in your life, keep growing and be a successful person in your life. First of all, follow my rules. Thank you very much. That's it. Bye bye. See you tomorrow in the next session. Wish you all the best. Like, subscribe, and share.